Okay, students, so let's get started with O-level physics, May, June 2025, paper 1, variant 1. This is an MCQ space paper. So let's try it out. Bismillah Rahman Rahim. Let's zoom in a bit. Which quantity has both direction and magnitude, and is it a scalar or a vector quantity? भाई मास के पास तो सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है. मास ओनली कंटेन्स अ मैग्नीट्यूड, सो दिस ऑप्शन विल गेट कैंसल्ड आउट, ए विल गेट कैंसल्ड आउट, बी विल गेट कैंसल्ड आउट. Weight has both a magnitude and direction, and weight is a vector quantity. It is simple. The speed time graph shows the part of the journey for a bicycle of 10 seconds. Okay. What is the distance traveled? What is the distance that the bicycle travels in 10 seconds? Whenever you see the speed time graph, आपने क्या key point सोचना है? Area under speed time graph is equals to your distance. Area under a speed time graph is equals to your distance. Can you calculate this area? Yep. Area is equals to 1 upon 2. This is a trapezium. This is your first parallel side. That is 1. What is your second parallel side? This one. That is 4. एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का क्या फॉर्मूला होता है? 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू द हाइट, दैट इज 10. सो यहाँ पे मैं फॉर्मूला भी लिख देता हूँ फॉर द स्टूडेंट्स दैट डोंट नो दिस. एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का क्या फॉर्मूला होता है? 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स into height. What are the parallel sides? These yellow ones, 1 and 4. What is this height? 10. Yeah, yeah, 1. Yeah, yeah, 5. 5 into 5 क्या हो जाएगा? 25 meters. B is your answer for the total distance traveled by the bicycle in 10 seconds. Simple है, कुछ भी हमने इसमें complicated नहीं किया बेटा. ठीक है? Let's further move ahead. Let's further see the next question. Which statement explained why a heavy coin that falls through a short distance towards the ground does not reach terminal velocity? बेटा एक हैवी कॉइन जो कि फॉल कर रहा है ओनली अ शॉर्ट डिस्टेंस, व्हाई डज इट नॉट रीच टर्मिनल वेलोसिटी? बिकॉज अगर आप शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल कर, इफ यू आर ओनली ट्रैवलिंग अ शॉर्ट डिस्टेंस, योर वेट विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन एयर रेजिस्टेंस. अगर आप शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हो, यू आर नॉट अलाउिंग द एयर रेजिस्टेंस टू इंक्रीज सफिशिएंटली. वेट हमेशा ज्यादा होगा कंपेयर टू एयर रेजिस्टेंस. यू विल नेवर एवर रीच टर्मिनल वेलोसिटी. डी इज योर आंसर. The diagram shows the load versus extension graph for a spring. What is the name given to point X on the graph? What is point X? Point X is the limit of proportionality. B is your answer. Some students measure the masses and the volumes of differently sized samples of a type of a wood. Okay. Which graph shows their results? Okay. So have you studied this formula? Density is equals to mass over volume. बेटा हमने ये formula पढ़ा है. Density is equals to mass over volume. Let's take volume to the left side. Density multiplied by volume is equals to your mass. Now, can you realize this is a specific type of wood? This is a specific type of wood. बेटा अगर ये एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ वुड है, इसका मतलब क्या है? आपकी डेंसिटी कांस्टेंट रहेगी. इफ दिस इज अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ वुड, द डेंसिटी विल रिमेन कांस्टेंट. Volume will become directly proportional to mass. Whenever two quantities are directly proportional, you draw a graph like this. बेटा हमेशा याद रखो, whenever two quantities such as x and y are directly proportional, which type of a graph will you draw? You will draw a graph denoting a line passing through the origin. And whenever two quantities are inversely proportional, x is inversely proportional to y, किस तरह का ग्राफ बनेगा? Y on this axis, X on this axis, a curve like this. ठीक है. इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी का ग्राफ राइट वाला है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी का ग्राफ इज लेफ्ट वाला. दिस इज फॉर इनवर्स, द अदर वन इज फॉर डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी. लेट्स फर्दर मूव अहेड. The diagram shows a section of a roller coaster ride that is a circle arranged vertically. Okay.
So you have a circle that is arranged vertically. Okay. Now, let's further see क्या लिखा हुआ है अभी. You are undergoing circular motion. ठीक है, ये ट्रक जो है वो circular motion undergo कर रहे हैं. The truck is moving at constant speed at the position shown. Okay. Which arrow shows the direction of resultant force acting on the truck? अच्छा जी. सर्कुलर मोशन की वजह से रिजल्टेंट फोर्स का आरो कहाँ आएगा? Always remember, whenever you are performing circular motion, the resultant force act towards the center. ये आपका सेंटर ऑफ सर्कल है. कोई ऐसी फोर्स है जो सेंटर ऑफ सर्कल के टुवर्ड्स एक्ट कर रही है? यस, ऑप्शन डी. व्हाट इज द यूनिट फॉर मोमेंटम? मोमेंटम हैज टू यूनिट्स. ऑलवेज रिमेंबर, मोमेंटम के दो यूनिट्स होते हैं. वन इज केजी मीटर पर सेकेंड एंड द अदर यूनिट ऑफ मोमेंटम इज न्यूटन सेकेंड. ठीक है, मोमेंटम के बच्चे दो यूनिट्स होते हैं. पहला यूनिट क्या है? केजी मीटर पर सेकेंड, और दूसरा यूनिट है न्यूटन सेकेंड. ए इज योर आंसर बिकॉज ए इज केजी मीटर पर सेकेंड. In a safety test, a car collides with a concrete block. Okay, the impulse exerted by the car on the block is this. Okay, so this is your impulse. Perfect. The collision with the block lasts for 70 milliseconds. What is the force exerted on the car? Okay. बेटा क्या आपको ये बात याद है कि impulse is equals to what? Force into change in time. Impulse क्या है आपका? 14,000. Okay. You have to calculate the force. What is your change in time? 70, and you have a m here. ये क्या है? Milliseconds. 10 raised to the power of minus 3. Can you calculate the force? Yes. 14,000 divided by 70. 10 raised to the power of minus 3. क्या हम ये निकाल सकते हैं बेटा? Yes. 14,000 divided by 70 into 10 raised to the power of minus 3. This comes out to be 20000 Newton. C is your answer. So let's further move ahead. An object being pulled around horizontal ground accelerates to the right. The diagram shows the direction of forces acting on the object. Which force is multiplied by distance to calculate the work done? बेटा किस फोर्स को मल्टीप्लाई करेंगे by distance to calculate the work done to increase the kinetic energy? देखो, कॉन्टैक्ट फोर्स वर्टिकल डायरेक्शन में तो हम ट्रैवल नहीं कर रहे. देखो, वर्क डन जब हम निकालते थे तो यू टुक द फोर्स मल्टीप्लाइड इट बाय द डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. इन द डायरेक्शन आप फोर्स लेते थे, उसको मल्टीप्लाई करते थे विद द डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. यहां पे कैन यू सी यू आर ट्रैवलिंग हॉरिजॉन्टली? यस. दैट मीन्स यू कैन नॉट टेक एनी ऑफ द वर्टिकल फोर्सेस. कॉन्टैक्ट फोर्स भी नहीं लोगे, वेट भी नहीं लोगे. ना ही कॉन्टैक्ट फोर्स, ना ही वेट. सेकेंडली, यू आर मूविंग टूवर्ड्स द राइट. आप राइट की तरफ मूव कर रहे हो तो आप राइट वाली फोर्स पिक कर लोगे. पुलिंग फोर्स. सी इज योर आंसर. The mass of object P is greater than the mass of object Q. Okay, mass of object P is greater than the mass of object Q. Okay. The object contains different amount of matter and have a different resistance to change in motion. Which row is correct? बेटा अगर मास ऑफ पी ग्रेटर है मास ऑफ क्यू से, मैटर किस में ज्यादा होगा? पी में. ग्रेटर रेजिस्टेंस टू चेंज इन मोशन कौन सा करेगा? पी. ए इज योर आंसर. ओके. अ बिल्डर leaves two identical heavy stones tiles resting on soft earth. One is vertical, one is horizontal. Okay. बेटा दोनों tiles identical हैं. What does this mean? Both of them have the same amount of weight or same amount of force. Okay. After a few hours, the vertical tile has started to sink into the soft earth. Why is this the case? क्योंकि आप अगर vertical tile को देखो तो इसका एरिया इन कॉन्टैक्ट विद द सॉफ्ट अर्थ. बेटा वर्टिकल टाइल का जो एरिया इन कॉन्टैक्ट विद द सॉफ्ट अर्थ है वो कम है. सर इसकी वजह से क्या हो जाता है? प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स ओवर एरिया. फोर्स इज कांस्टेंट फॉर बोथ द टाइल्स. वेट की फोर्स इज कांस्टेंट फॉर बोथ द टाइल्स. तो वेट को आपने प्रोपोर्शनैलिटी के साइन के साथ रिप्लेस कर देना है. प्रेशर बिकम्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया. Since the vertical tile has a lesser area, it will have a greater pressure.
The horizontal one has not started to sink in. Why? क्योंकि horizontal का एरिया तो देखो कितना ज्यादा है. The horizontal tile has a greater area, hence its pressure is less, hence it doesn't sink into the ground. Simple सी बात. चलो जी. Which row correctly identifies the things? Forces are same, pressures are different. C is your answer. Four beakers contain the same liquid. Same liquid contain करने का क्या मतलब है बेटा? आपकी लिक्विड की डेंसिटी सेम है. यू हैव द सेम डेंसिटी ऑफ लिक्विड. ओके. एट विच पॉइंट इज द प्रेशर ग्रेटेस्ट? लिक्विड में प्रेशर किस तरह निकालते थे? प्रेशर इज इक्वल टू रो जी एच. Since all of the liquids have the same density, all of them have the same gravitational field strength, pressure directly depends on the depth. Pressure directly depends on the depth. तो किस ऑब्जेक्ट में डेप्थ ज्यादा है? एट out of A, B, C, D, which object is at the greatest depth? Can you realize? Depth of C is this, depth of B is this, depth of D is this, और A तो सरफेस पे, इसकी डेप्थ क्या हो जाएगी? जीरो. तो which one has the greatest depth? Which one has the greatest H? C. C will has the greatest pressure. Okay. The strength of the forces between the particles of a solid determine how much the solid expands when heated. Okay. Which statement about these forces is correct? The forces within the solids are strong, hence they expand less than liquids and gases. A is your answer. अब आ जाओ 14 पे. Air is heated in a sealed container with constant volume. Why does air pressure increases when temperature increases? बेटा एयर प्रेशर क्यों इंक्रीज होता है when temperature increases? When temperature increases, the molecules have more kinetic energy. As they have more kinetic energy, the collision with walls increases. The collisions with walls increase, hence collision with wall increase होंगे या more frequently होंगे तो आपका pressure increase कर जाएगा. सी इज योर आंसर. A student determines the specific heat capacity of a metal carrying out an experiment. What is the formula of specific heat capacity? Q divided by mass divided by change in temperature. The list shows the apparatus that the student has available. ये सारे apparatus आपके पास available हैं. Which apparatus does the student use? अच्छा भाई, student ने कुछ इस तरह के apparatus use करने हैं so that he can calculate Q, that is the amount of energy, mass and the change in temperature. देखो मास निकालने का तो एक ही इंस्ट्रूमेंट मुझे दिख रहा है. आई कैन सी ओनली वन इंस्ट्रूमेंट दैट कैन मेजर द मास, इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस. ओके. चल. सो हम वो ऑप्शन कैंसिल आउट कर देंगे जिसमें वन का ऑप्शन नहीं. ओके. व्हाट एल्स डू यू नीड? यू नीड चेंज इन टेम्परेचर. चेंज इन टेम्परेचर निकालने का भी एक ही इंस्ट्रूमेंट दिख रहा है, दैट इज थर्मोमीटर. तो currently you have two quantities sorted out, mass and change in temperature. A और B options में से कोई आपका आंसर हो सकता है. Now you want to calculate this energy. Energy का फॉर्मूला क्या होता है? Energy is equals to power into time. Okay. You have a heater that is operating at a power of 50. You have the power. टाइम किससे मेजर कर लेंगे? स्टॉप वॉच से. So collectively, these two instruments can give me the energy. So 4, 5, 1 and 3 is your option. Let's further move ahead. When a liquid evaporates, molecules escape from its surface. Which molecules escape and what happens to the average kinetic energy of the molecules remaining in the liquid? Beta, more energetic molecules will escape and the average kinetic energy will decrease during evaporation. C is your answer. आ जाओ आगे. A sample of water in a beaker is at temperature T. The surface area of the water is A. An electric fan blows air across the top of a beaker at speed V. For which values of temperature, area, and V does the water evaporates most rapidly? बेटा कौन सी वैल्यूज ऑफ टेम्परेचर, एरिया एंड वेलोसिटी के लिए इवेपोरेशन सबसे ज्यादा होगी? फॉर इवेपोरेशन टू बी ग्रेटेस्ट, अगर आप चाहते हो कि रेट ऑफ इवेपोरेशन ज्यादा हो, इफ यू वांट द रेट ऑफ इवेपोरेशन टू बी ग्रेटेस्ट, व्हाट डू यू वांट?
You want the temperature to be the greatest, highest. Surface area should also be the greatest. And wind speed should also be the highest. टेम्परेचर हाईएस्ट होना चाहिए इसलिए ए और बी ऑप्शन कैंसिल आउट. एरिया हाईएस्ट होना चाहिए इसलिए वी विल टेक ऑप्शन सी. Thermal energy passes from hot regions of a metal to a cold regions of a metal. Why metals are good conductors of thermal energy? हमने बताना है भाई why metals are good conductors of thermal energy. Why? Metals good conductors of thermal energy क्यों होते हैं? Because electrons move quickly from ions in hot region to ions in cold region. बेटा मेटल में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो हॉट रीजन से कोल्ड रीजन की तरफ मूव करते हैं. दे ट्रांसफर एनर्जी अलोंग दैट. द डायग्राम शोज लाइट स्ट्राइकिंग अ प्लेन मिरर एंड रिफ्लेक्टिंग. व्हाट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस? एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता था? हाँ जी, याद है किसी को डेफिनेशन? एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे. Angle between normal and incident ray is your angle of incidence. ये क्या आ गई आपकी इंसिडेंट रे? ये क्या है? नॉर्मल. द एंगल बिटवीन देम is your angle of incidence. B is your answer. A shoe shop puts a mirror on the wall so that the customers can look at their shoes. The length of the mirror is 50 centimeter. A customer has eyes 150 centimeter above level ground. ठीक है, कस्टमर है जिसकी eyes हैं 150 centimeter above level ground. The bottom of the mirror is at height h above the ground. Bottom of the mirror क्या? Height h above the ground. What is the smallest value of h that allows the customer to see an image of his shoes in the mirror? You have to calculate the smallest value of h. देखो बेटा, आपने shoes देखने हैं in the mirror. So let's say you have to see the shoes in the mirror like this and like this. This is your normal. This is your angle of incidence. This is your angle of reflection. But if I want the smallest value of h, I must realize कि ये जो light ray strike कर रही है on the mirror, it is striking at the middle. This is a total distance of 75 centimeter. 75 centimeter is equals to 50 centimeter plus h. H will be equal to what? 75 minus 50 is equals to 25 centimeter. H की value क्या आ गई? B. Sir, can you draw the diagram as well for this? Beta, I am assuming that this 50 centimeter mirror has come right here. This is your smallest value of h. This overall should be equal to 75 centimeter. H comes out to be 25 centimeter. What is the description of a dull black surface? Dull black surfaces are good emitters, good absorbers. Nah. Dull surfaces are good emitters, good absorbers, and poor reflectors. C is your answer. अच्छा जी. The rays of light from a ray box pass through three lenses at position 1, 2 and 3. अच्छा जी, आप three lenses के through pass कर रहे हो at position 1, 2 and 3. Okay. Which type of lens is used at each position? कौन सा lens use हो रहा है at each position? Can you realize position 1 पे आपकी रे कन्वर्ज हो रही है. इनिशियल पाथ ऑफ रे कुछ इस तरह था. नाउ इट हैज कन्वर्ज. तो कौन सा लेंस हो गया? कन्वर्जिंग. सी एंड डी कैंसिल आउट. नाउ लेट्स एनालाइज एट पोजीशन 2. If I draw a dotted line here again, continuing the path, can you see position 2 पे भी क्या हो गया है? आपकी रेस कन्वर्ज हो गई है, वरना ये डॉटेड लाइन वाला पाथ होता. ओके, so converging and converging, either option A or B can be your answer. Let's continue this way. कैन यू रियलाइज पोजिशन सी पे आपकी रे का पाथ डाइवर्ज कर दिया है, वरना ये डॉटेड वाला होता. So that will be a diverging lens. B is your answer. A swimming pool is lit by an underwater light. A ray of light is incident on the surface of water. What is the path of the ray of light? Always remember, if you want to keep the ray of light inside the surface of water, you will perform total internal reflection, जो कि path
C से denoted है. Which type of phenomena is happening? Total internal reflection. Simple. Let's further move ahead. When a converging lens is used as a magnifying glass, what is the nature of the image? Whenever you have a image formed using magnifying glass, your image will be virtual and upright. D is your answer. Magnifying glass से हमेशा virtual and upright images. A sound wave consists of compression and rarefactions. Which type of a wave is sound? Longitudinal. C and D cancel out. And how does the pressure in rarefaction compares with the pressure in a compression? Rarefaction में हमेशा pressure smaller होता है because molecules are away from each other. What happens to a sound wave when the note heard gets louder? अगर आपकी sound wave louder हो रही है तो क्या होगा? Amplitude increases. A is your answer. Let's see this. A pulse of ultrasound from a sensor is reflected back to the sensor by a crack in a piece of metal. अच्छा जी. एक पल्स ऑफ अल्ट्रासाउंड है जो कि क्रैक से रिफ्लेक्ट बैक हो रही है इस तरह. ओके. The reflection from the crack is received within 1 into 10 raised to the power of minus 5 seconds. अच्छा, ये पूरी reflection from the crack is received back in a time of 1 into 10 raised to the power of minus 5 seconds. Okay. Now, furthermore देखो बेटा क्या लिखा हुआ है. If you further realize क्या लिखा हुआ है. द रिफ्लेक्शन फ्रॉम द बॉटम सरफेस. अच्छा, ये जो बॉटम सरफेस पे रे जाके हिट कर रही है और वापस रिसीव हो रही है उसमें कितना टाइम लग रहा है? 1.5 into 10 raised to the power of minus 5 seconds. The speed of the ultrasound is this. You have to calculate the distance x. अच्छा जी. बेटा देखो थोड़ा सा सवाल को गौर करो. अगर बॉटम सरफेस से लाइट रिफ्लेक्ट होके वापस आ रही है, इट इज टेकिंग अ टाइम ऑफ व्हाट? 1.5 into 10 raised to the power of minus 3. अगर क्रैक से लाइट हिट करके वापस आ रही है, इट इज टेकिंग अ टाइम ऑफ व्हाट? 1 into 10 raised to the power of minus 3. तो व्हाट इज द टाइम का डिफरेंस बिटवीन द टू? कैन यू कैलकुलेट द डिफरेंस इन टाइम? 1.5 10 raised to the power of minus 5 minus 1 into 10 raised to the power of minus 5. This comes out to be what? 0.5 into 10 raised to the power of minus 5 seconds. This is your time difference. This is your time difference between the two pulses. What is the speed of ultrasound? ये है. Can you calculate the distance traveled? Yep. 0.5 into 10 raised to the power of minus 5 into the velocity, that is 5200. क्या आंसर आ जाएगा? What will your answer come out to be? This comes out to be 0.026 meters. अब बेटा ये हमें बता रहा है कि क्रैक से जो रे रिफ्लेक्ट हो रही है और बॉटम से जो रे रिफ्लेक्ट हो रही है उन दोनों के बीच में डिस्टेंस का कितना डिफरेंस है. देखो ये जो हमारे पास डिस्टेंस आया है वो हमें ये बता रहा है कि जो आपकी क्रैक से ये क्रैक से जो रे रिफ्लेक्ट हुई है, ये अल्ट्रासाउंड रिफ्लेक्ट हुई है, और बॉटम से जो अल्ट्रासाउंड रिफ्लेक्ट हुई है, उन दोनों के बीच में डिस्टेंस ट्रैवल्ड का क्या फर्क है. इन दोनों के बीच में डिस्टेंस ट्रैवल का जो फर्क है दैट इज 0.026 मीटर. और डिस्टेंस ट्रैवल्ड है क्या? देखो, कैन यू रियलाइज ये जो क्रैक पे अल्ट्रासाउंड हिट कर रही है वो इतना डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है. पहले नीचे जा रही है फिर ऊपर आ रही है. जो बॉटम पे अल्ट्रासाउंड हिट कर रही है वो इतना डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है, पहले नीचे जा रही है फिर ऊपर आ रही है. दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? ये दो लाइंस का. कैन आई मेक देम सेपरेटली? यप. The difference between the distance of the two ultrasounds is this. ये आपका टोटल डी आया है. ये जो टोटल डी आया है ना वो ये है, ग्रीन हाईलाइटेड दो लाइंस. ये जाने का डिस्टेंस और आने का डिस्टेंस टोटल क्या आया है? 0.026. बट यू हैव टू कैलकुलेट एक्स. ये तो आपने टोटल डिस्टेंस निकाला है. एक्स किस तरह निकालोगे? 0.026, दैट इज द टोटल डिस्टेंस को डिवाइड बाय 2 कर दोगे, 0.013 मीटर्स. ए इज योर आंसर. सिंपल, इजी पीजी, लेमन स्क्वीजी. आगे बढ़े. A 12 volt battery is connected to a resistor of resistance 100 ohms. How much charge passes through the resistor in 30 minutes? Okay.
So how will you calculate that? कैसे calculate करोगे? First of all, you have the voltage, you have the resistance. Can you calculate the current? V is equals to IR लगा दो. Voltage क्या है 12, I नहीं पता, resistance पता है. What does your I comes out to be? 0.12 ampere. Perfect. Charge निकाल सकते हो. Charge is equals to IT. Current क्या है 0.12. Time कितना है 30 minutes. 30 into 60 seconds. 0.12 into 30 into 60. This comes out to be 216 coulombs. Round it off. This becomes 220 coulombs. 28 का आंसर is simple B. अच्छा जी. A circuit consists of resistor connected between positive terminal and the negative terminal of a power supply. Which row describes the direction of conventional current and the direction of flow of free electrons? बेटा कन्वेंशनल करंट की क्या डायरेक्शन होती है? हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव. What is the direction of flow of electrons from negative to positive? C is your answer. Okay, let's further move ahead. The graph shows how the resistance of a thermistor varies with temperature. भाई resistance of thermistor temperature के साथ किस तरह वेरी कर रही है आपको क्या मैंने? The thermistor is at a temperature of 10 degrees centigrade. If you are at a temperature of 10 degrees centigrade, what is the resistance of the thermistor? 80 ohms. Okay. And is connected in series with a fixed resistor of 20 ohms. ठीक है भाई, एक थर्मिस्टर है आपके पास इस तरह का. This is connected in series with a 20 ohm resistor. Thermistor की resistance क्या है 80 ohm. You have to I guess calculate the total resistance. Total resistance in series क्या हो जाएगी 80 plus 20 that is equals to 100 ohms. क्या आंसर आ जाएगा D zero. Let's further move ahead. What is the total resistance of the circuit? How will you calculate that? बेटा ये दो resistors parallel में है. How will you calculate the resistance of these two parallel resistors? 1 over RT is equals to 1 over 6 plus 1 over 6. 1 over RT is equals to 2 over 6. RT comes out to be 3 ohms. So how will you make this circuit? This is 6 ohms. This is 3 ohms. Yep. 6 plus 3, that will be equal to 9 ohms. Is your answer. An alternating AC generator is connected to an oscilloscope, मतलब CRO से connected है. The diagram shows the trace produced on the oscilloscope screen. Okay, so this is the trace produced on the oscilloscope screen. What are the possible angles between the plane of the coil and the magnetic field direction at the times represented by point 1, 2 and 3? हमने बताना है point 1, 2 and 3 पे आपके angles क्या होंगे of the coil. So at point 1, can you realize the EMF becomes 0? आपकी EMF क्या है? Induced EMF 0 है. जब भी induced EMF 0 होती है आपकी कॉइल क्या होती है? AC जनरेटर में वर्टिकल. वर्टिकल का मतलब क्या है? आपकी कॉइल होगी at 90 डिग्री. तो A ऑप्शन कैंसिल आउट, B ऑप्शन कैंसिल आउट. ओके, 2 को देखो. At 2 you have maximum पॉजिटिव वोल्टेज. मैक्सिमम पॉजिटिव वोल्टेज कब होता है? व्हेन यू आर हॉरिजॉन्टल. हॉरिजॉन्टल दो एंगल्स पे हो सकता है, आइदर 0 डिग्री और 180 डिग्री. एनी ऑप्शंस लाइक दैट? सी इज योर आंसर. 180 डिग्री पे हॉरिजॉन्टल हुआ है, मैक्सिमम वोल्टेज है. यू डोंट नीड टू सी एनीथिंग एल्स. अच्छा जी. A beam of beta particles traveling vertically downward. Okay, so these are negative particles. Perfect. Enters the magnetic field between two magnetic poles. The beta particles experience a force. What is the direction of force? You have to calculate the direction of force. कौन सा law लगाओगे? Fleming's left hand rule. Left hand rule. Easy peasy lemon squeezy. अच्छा जी. Magnetic field कहाँ जा रही है? From north to south. Your first finger will point from north to south. This is your magnetic field. These are your negative charges moving vertically downwards. Do you remember a key point? Direction of current. क्या आपको एक की पॉइंट याद है बेटा? डायरेक्शन ऑफ करंट इज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ नेगेटिव चार्जेस. डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होता है? ऑपोजिट होता है टू द डायरेक्शन ऑफ नेगेटिव चार्जेस. इफ द नेगेटिव चार्जेस आर मूविंग डाउनवर्ड, करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी? अपवर्ड, है ना. इफ द नेगेटिव चार्जेस आर मूविंग डाउनवर्ड, करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी?
upward. The force will be acting inward like this. फोर्स आपकी इनवर्ड एक्ट कर रही होगी. लेट मी इरेज दिस एक्स्ट्रा. Your force acts into the page or inward. C is your answer. You can put your left hand and try this out as well. ठीक है. आप अपना लेफ्ट हैंड पुट भी कर सकते हो बेटा, इसको ट्राई आउट भी कर सकते हो. करंट डाउनवर्ड की तरफ मूव कर रहा है. ओके, लेट मी ड्रॉ इट अगेन. आई थिंक आई हैव ड्रॉन इट अ बिट मेसी. आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है, चलो मैं वापस इसको ड्रॉ कर देता हूँ. मैग्नेटिक फील्ड इस तरह है. करंट क्या आ जाएगा? अपवर्ड. वाई? बिकॉज नेगेटिव चार्जेस आर मूविंग डाउनवर्ड्स. आपकी फोर्स कहाँ आ जाएगी बेटा? इनटू लाइक दिस. ठीक है, क्लियर है. चलो. एंड ऑल्सो दिस इज योर फर्स्ट फिंगर. दिस इज योर सेकेंड फिंगर. एंड दिस इज योर लवली लिटिल थंब. लेट्स फर्दर मूव अहेड. 34 पे आ जाते हैं. Okay, a step-up transformer is connected between a power station and a long-distance electricity transmission grid. Okay, what is the purpose of a step-up transformer? Step-up transformer क्या करता है? Current को decrease कर देता है. And which type of current is used? AC. B is your answer. Which diagram shows the... Okay, so each diagram shows the nucleus of an atom. Which diagram shows isotopes of the same element? Isotopes क्या होते हैं? Same proton number. Can you realize protons are highlighted with this dark thing? यहाँ पे कितने protons है? वन में थ्री. How many protons do we have here? थ्री. थ्री सिक्स. How many protons do we have here? फोर. How many protons do we have here? थ्री. Can you realize तीन protons सिर्फ कहाँ कहाँ पे? वन और फोर में. These are isotopes of each other. B is your answer. A radioactive nucleus X decays to form another radioactive nucleus. After a number of decays, a stable nucleus Q is produced. अच्छा जी, X है, उसमें number of decays होते हैं, Q produce हो जाता है. Okay. The proton number of X, okay, proton number जो downward लिखा होता है, is equals to the proton number of Q. अच्छा जी, दोनों का proton number same है. The nucleon number of X, let's say this is B, is 4 more than the nucleon number of Q. ठीक है. Q का न्यूक्लियन नंबर B-4 कर दिया, X का न्यूक्लियन नंबर हमने B कर दिया. ओके. विच रेडिएशंस आर इमिटेड? देखो, मास नंबर अगर डिक्रीज कर रहा है बाय 4, दैट मींस वन अल्फा पार्टिकल इज फॉर श्योर इमिटेड. दिस विल बी B-4, A-2. ठीक है. लेकिन B-4, अब मास नंबर तो आप सही ले आए हो. आपका न्यूक्लियन नंबर या फिर मास नंबर, वॉट एवर यू वांट टू से, ये तो सही आ गया. हाउ विल यू एडजस्ट फॉर द प्रोटॉन नंबर? बीटा पार्टिकल emit करा दो. If you emit a beta particle, what will happen? Your proton number increases by 1. Mass number remains unchanged. B-4 Q. प्रोटॉन नंबर 1 से इंक्रीज हो जाएगा, ये हो जाएगा A-1. फर्दर आप क्या करोगे? एक और बीटा पार्टिकल emit करा दो, है ना. एक और बीटा पार्टिकल emit करा दो बेटे. एक और बीटा पार्टिकल emit कराओगे, मास नंबर सेम रहेगा, प्रोटॉन नंबर increases by 1. You have the configuration that you initially desired. X का प्रोटॉन नंबर A था, मास नंबर B था. Q का प्रोटॉन नंबर A है, मास नंबर B-4 है. To achieve the desired configuration, you are emitting one alpha particle, two beta particles. D is your answer. The graph shows the result of an experiment to measure the count rate of a radioactive isotope. What is the half life of the radioactive isotope? बेटा देखो, इनिशियल काउंट रेट क्या था? 1000. अब अगर आपको हाफ लाइफ निकालनी है तो ये काउंट रेट क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा. ये काउंट रेट 1000 से 500 कितनी देर में हो रहा है? 60 मिनट्स में. व्हाट इज द हाफ लाइफ? ए, दैट इज 60 मिनट्स. ओके. During fission reaction, a nucleus of uranium-235 observes one neutron to produce two daughter cells and three neutrons. अच्छा, इसको बना लो. एक न्यूट्रॉन एब्जॉर्ब हो रहा है, यूरेनियम-235 है. दिस रिजल्ट्स इन क्रिप्टॉन दैट इज 92
KR प्लस दूसरा कौन सा था, दूसरा डॉटर सेल हमें नहीं बताया, लेकिन मुझे पता है दैट्स बेरियम, बट लेट्स लेबल इट एज एक्स। चलो हमें नहीं पता तो हम उसे एक्स लेबल कर देते हैं। विथ अ मास नंबर अननोन प्लस यू हैव 3 न्यूट्रॉन्स। ओके, you have to calculate how many nucleons does the daughter cell have। ये आपको B की वैल्यू निकालनी है। You have to calculate how many nucleons does the daughter cell have। So I will utilize a key point, sum of nucleon number on left hand side must be equal to sum of nucleon number on right hand side। बेटा लेफ्ट हैंड साइड पे क्या क्या न्यूक्लियन नंबर है, 1 and 2 3 5, 1 + 2 3 5। राइट साइड पे क्या क्या न्यूक्लियन नंबर है, 92 प्लस बी प्लस 3 × 1 दैट इज 3। 236 minus 95 is equals to your answer of B। What does your answer comes out to be? 235 minus 9, 236 minus 95. This comes out to be 141. B is your answer. Simple. The orbital speed of a planet around the sun is V and the orbital period is T. Jupiter is further from the sun than Earth. Okay, so let's say this is sun. ये आ गया आपका अर्थ, छोटू सा क्यूट लिटिल, और ये आपका जुपिटर आ गया। Which planet has a greater value of orbital speed? Obviously Earth, because Earth is closer to the sun. तो C और D तो कैंसिल हो जाएगा। Which planet has a greater value of the orbital period? किसको ज्यादा टाइम लगेगा around the sun? Obviously Jupiter, because Jupiter is further away from the sun। आपकी gravitational forces of attraction कम होंगी, hence Jupiter will take a larger amount of time। B is your answer। Earth will have a greater orbital speed। Okay. What is the Earth's position in the order of planets from the sun? Earth is the third closest planet to the sun। Easy peasy lemon squeezy।